Hello everyone, I hope you all are doing well. तो आज आम स्टार्ट करूँ रियल एनालिसिस राइट रियल एनालिसिस रो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गुडी को सॉल्व करने आम डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करता राइट सो दैट आम कम समय भितर मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करि परिबो इन एग्जाम रे राइट हमर मेन प्रायोरिटी ही या रहइबो जे हमको आमे तुमको मैक्सिमम रो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेबो सो दैट तुम्हें से क्वेश्चन साहाय्य तुम डिफरेंट टेक्निक शिखिबो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को केमिति सॉल्व करा जाए ता सहित नुआ नुआ कांसेप्ट मध्ये शिखिबो आउ सेमिति काहे कि आमे सॉल्व करूची ताकू मध्ये तुमे बुझिया पई चेष्टा करिवो राइट सो दैट तुमे सही टेक्निक यूज करिके तुमे कम समय रे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन रे केमिति अटेम्प्ट करिवो से ऊपर हमरो मेन फोकस रहइबो राइट आउ बाकी किसी क्वेश्चन लेंदी थिवो ताकू तो आमे एग्जाम हॉल तो ताकू हमको स्किप करिया पे पड़े एठी भी आमे कोन करिवो सेही अनुसार एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रैक्टिस करिवो क्वेश्चन गुडी को सो दैट लेंदी क्वेश्चन रो जदी हमको किसी सिखिबा पई मिलिवो तो सेठी आमे डिस्कस करिवो न ताकू अवॉइड करिकि जिवो राइट ओके तो आज आमे स्टार्ट करिवो countability of sets right what is the meaning of countability of a set right what is the meaning of countability of a set countability means what countability means आमे बेसिकली सेट रो सपोज मो पाखरे गोटे सेट अछि तो मो सेट रो कोन देखिबी ना पोटेंशियल चेक करिवि राइट पोटेंशियल मीन्स कोन पोटेंशियल मीन्स होची कार्डिनलिटी फाइंड आउट करिवि दैट मीन्स मो सेट रे नंबर ऑफ एलिमेंट केते अछि मो ताकू फाइंड आउट करिवि इन दिस चैप्टर राइट एठी हमकु दुई टाइप ऑफ सेट देखिबा को मिलिवो गोटे होची फाइनाइट सेट राइट आ गोटे होची इनफाइनाइट सेट राइट फाइनाइट सेट रे मु इजीली कार्डिनलिटी फाइंड आउट करि परिबी इनफाइनाइट रे मते कार्डिनलिटी फाइंड आउट करिबा चैलेंजिंग रहइबो राइट इनफाइनाइट सेट रे को टाइप रो इनफाइनाइट सेट रे मु कार्डिनलिटी फाइंड आउट करिबा मो पई डिफिकल्ट टास्क रहइबो से होची इनफाइनाइट सेट बेसिकली हमें दुई टाइप रो पाइबो गोटे होची अनकाउंटेबल टाइप रो राइट आ गोटे होची काउंटेबल टाइप रो राइट काउंटेबल सेट रो कार्डिनलिटी तो आमे फाइंड आउट करि नबो सेथिरे हमरो कोन प्रॉब्लम होबनी बट अनकाउंटेबल सेट रो कार्डिनलिटी हमको फाइंड आउट करिबा टिके चैलेंजिंग रहइबो राइट तो फर्स्ट हमें देखिबो जे किछि डेफिनेशन हमें कोन करिवो रिकॉल करिवो तापरे याकू कंटिन्यू करिवो ए डिस्कशन को हमें आगो को कंटिन्यू करिवो राइट तो प्रथम देखिबा हमें कोन ना फर्स्ट देखिबो हमें व्हाट इज सेट सेट मीन्स व्हाट हमें आगुरु मध्ये पढिछु व्हाट इज सेट means होची a well defined collection of distinct object is called a set right तो well defined collection right what is the meaning of well defined collection that means suppose मु कोन करिवि ना मु किछि collection find out करिवि right को टाइप रो collection ना well defined collection well defined means what well defined means simply meaning is simple there is no confusion regarding inclusion or exclusion right that means कोन ना मो पाखरे किसी कन्फ्यूजन नथिवो जे मु एई कलेक्शन रे को टाइप रो ऑब्जेक्ट गुडा को इंक्लूड करिवि आउ को टाइप रो ऑब्जेक्ट गुडा को एक्सक्लूड करिवि राइट दैट मीन्स सपोज मु गोटे एग्जांपल नेबी s मु सेही भलिया नेचुरल नंबर गुडा को कलेक्ट करिवि सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 5 हेतु दैट मीन्स एई कलेक्शन रे मु कोन करिवि ना को एलिमेंट गुडा को इनपुट करिवि ना 1 रहइबो 2 रहिबो 3
4 and 5 आउ बाकी जदि मु पचारिबी 6 रहइबो कि नै ना 6 is not contained in this set because 6 is greater than 5 right तो यही कलेक्शन गुड़ारे आमर किसी कौन सी प्रकार भी कन्फ्यूजन रही सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ डिस्टिंक्ट कलेक्शन इज कॉल्ड ए सेट राइट नेक्स्ट आमे देखिबो नेक्स्ट आमे कोन देखिबो ना नेक्स्ट आमे देखिबो गोटे छोट डेफिनेशन दैट इज इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल सिंबल राइट लेट m is belongs to capital N then the subset n is such that n belongs to n and n is less than equal to m that means 1 2 3 up to m percent then of n is called the initial segment of n that means mu kiछि bi gote suppose element nebi 6 belongs to capital N right then mu gote subset theory kari paribi that is n6 which is belongs to 1 2 3 4 5 and 6 this set is called a initial segment of natural symbol right this is called a initial segment of natural symbol right now ame kon karibo gude sabutu important definition देखिबो that is equivalent set or similar set एई definition द्वारा आमे set गुडा को comparison करि परिबो right that means गोटे सेट आ गोटे सेट भितरे आमे कोन करि परिबो ई डेफिनेशन साहायरे आमे कोन करि परिबो ना कंपैरिजन करि परिबो बाय देयर कार्डिनलिटी राइट ओके चलो देखिबो कोन कहूची से डेफिनेशन दैट मीन्स two sets A and B are said to be similar or equivalent if there exists a bijection map और आमे बाइजेक्शन बदले आमे कोन लिखि परिबो 1 1 corresponding between the set A and B right that means आमे set A को A set is similar to B केते बेले कहइबो ना जते बेले गोटे फंक्शन मैप करि परिबो A to B is कोन हितबो ना बाइजेक्टिव हितबो बाइजेक्टिव सिमिलर मीन्स कोन बाइजेक्टिव दैट मीन्स कार्डिनल आमे डिनोट केमति करिवो A is similar to B right this implied आमे लिखि परिवो द कार्डिनलिटी ऑफ A is equal to cardinality of B that means two sets जदि सिमिलर हितबे तांकर कार्डिनलिटी कोन होबो समान होबो राइट सिमिलर केते बेले हेबे ना सिमिलर पई आमे गोटे फंक्शन डिफाइन करिवो A सेट रु का पुट को ना B सेट को such that function is bijective हितबो right okay for example आमे गोटे एग्जांपल दवा राइट जेमति कि मु लिखिबे n is a natural number set right मु गोटे फंक्शन डिफाइन करिवि n रु गोटे सेट नेबी सपोज e is what e is the set of all even natural number right मु गोटे फंक्शन डिफाइन करिवि f of x equal to केते होबो ना मु लिखिबि 2x right now this function clearly we say f is 1 1 and on to map right that means n is similar to e right this implied we can write the cardinality of n is equal to the cardinality of e right second अछि कोन ना cardinality कोन cardinality होछि आगुरु भी तुमको कहि जे cardinality means कोन आमे number of element find out करिवु कोथरे नेचुरल in a particular set जो set रे हम cardinality find out करिवार अछि सेही set रो number of element find out करि right गोटे नोट लिखिबो दैट एम्प्टी सेट रो कार्डिनलिटी केते होय ऑलवेज 0 होय जेंति कि a दियाई 1 2 3 4 तो यारो कार्डिनलिटी केते हो ना 4 हो सेकंड डेफिनेशन देखिबो कोन ना फाइनाइट सेट हमें का कहबो ए नॉन एम्प्टी सेट A is said to be finite if it is similar to nm right nm कोन हम कहितली nm is the initial segment of natural number for some m belongs to n then m is called the cardinality of A that is A is similar to nm
So we say that cardinality of A is equal to n. ମୁଁ ଗୋଟେ एग्जांपल देखिए को बुझेबी इनफाइनाइट सेट आमे का फाइनाइट सेट आमे का कहबो सपोज A इक्वल टू हमर पाखरे अछि A B C D E राइट तो मु कोन करिवि ना मु गोटे ऑलवेज फाइंड आउट करि परिबि एलिमेंट 5 दिस इज बिलोंग्स टू कैपिटल N तो मु गोटे सेट डिफाइन करिवि इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल सिंबल S5 is a subset of N is equal to 1 2 3 4 5 right now yanku mu kon karibi na mapping karibi A1 को मैप करिवो B2 को मैप करिवो C3 को मैप करिवो D4 को मैप करिवो एंड E5 को मैप करिवो राइट दैट मीन्स मु गोटे बाइजेक्टिव मैप डिफाइन करली फ्रॉम A to S5 right that means A is similar to the initial segment of natural symbol right S5 that means cardinality of A is equal to cardinality of S5 and this is equal to what this is equal to 5 right that means this set is finite second किछि नोट देखिबो एम्प्टी सेट को हमें फाइनाइट सेट बोली कहबो आउ यारो कार्डिनलिटी केते हो ना 0 हो एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट प्रत्येक जतकी फाइनाइट सेट थिबे तारो सबसेट गुडा कोन हो फाइनाइट हो नाउ हमें देखिबो इनफाइनाइट सेट का को कहा जाय राइट इनफाइनाइट सेट हमें का कहबो ना ए नॉन एम्प्टी सेट व्हिच इज नॉट सिमिलर टू nm for any m belongs to n is defined as a infinite set आमे फाइनाइट सेट आमे का कहबो ना फाइनाइट सेट होची जदि जे कोन गोटे a सेट को आमे फाइनाइट केते बेले कहबो जदि a सेट सिमिलर टू केते होबो ना sn होबो देन मु कहबी a is a finite set right जदि a is not similar to sn then we can say for any n belongs to capital N then we call a is infinite set right okay now किछि नोट देखिबो ही रिगार्डिंग रे ना आमे मुझे कोन से दुईटा ऑर्बिटरी सेट नेबी ना A and B two arbitrary set now such that every possible map from A to B जतकी possible map होबो A to B is failed to be onto then we say that B has more potential than A जते भी याको A और B भितरे जति भी हमें मैपिंग करिवो that map is not onto every possible map is failed to be onto then we can say B has more cardinality than A right that means B has more potential than A similarly we can say every possible map from A to B is fails to be 1 1 then we say A has more potential than B याको हमें ध्यान रखियो राइट दैट मीन्स हमें कौन करिवो ना जदि हमको दुईटा सेट दिया हितबो आ ए दुईटा सेट भितरे दे कंपेयर करिवो जे को सेट रे को सेट रो पोटेंशियल अधिक को सेट रो पोटेंशियल कम तो मु कौन करिवि आको भितरे हमें पॉसिबल मैपिंग गुडा को फाइंड आउट करिवो धर जो पॉसिबल मैपिंग गुडा को फाइंड आउट करिवो राइट यदि एवरी पॉसिबल मैप ऑफ A to B is failed to be onto then we can say B has more potential than A if every possible map from A to B is failed to be 1 1 then we can say A has more potential than B right so हमें Cantor theorem देखियो what is Cantor theorem this is very interesting Cantor theorem let A be any arbitrary set right मु जे कोनसी गोटे arbitrary set उठेबी non empty arbitrary set and PA is the power set of A then Cantor theorem is saying there is a mapping there is no onto map from A to
power set of A. That means there is Cantor's Cantor theorem is saying there is no onto map from A to power set of A. This implied what? That means A has power set of A has more potential than A, right? This implied what? Cardinality of A, power set of A is strictly greater than the cardinality of A, right? Or we can write power set of A ro cardinality is greater than cardinality of A. This is strictly greater than, right? आमे देखी थिलो जे हमें फाइनाइट सेट गुड़ा जदि थिबो, फाइनाइट सेट जदि थिबो जे A और B दुईटा फाइनाइट सेट अछंती, that means A रे suppose A B C and B suppose 1 2 3, then हमें इजीली फाइंड आउट करि परिबो जे A और B सिमिलर हेबे, राइट? जदि या पाखरे आ गोटे एलिमेंट अछि देन cardinality of A is greater than cardinality of B होतला, राइट? जदि एठी आ गोटे एठी दुईटा एलिमेंट जदि 6 7 अछि तो हमें एमती माने फाइनाइट सेट रे तो हमें कंपैरिजन इजीली करि पारथलु, राइट? किंतु इनफाइनाइट सेट रे हमें कंपैरिजन करि होनथला, बिकॉज जेमति कि देखिबा मु जदि गोटे नेचुरल नंबर लिखिबी है ना, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर बट एमान कारो कार्डिनलिटी सेम, दैट मीन्स n टा z सहित समान, सेमती z टा q सहित समान. हमको देखा जाउची जे n रो पोटेंशियल z तुलना रे कम थिबो, बट एमिति नुह, मैथमेटिकली n और z पाखरे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट अछंती, दैट मीन्स दे हैव सेम पोटेंशियल, राइट? फॉर एग्जांपल दैट मीन्स हमें इनफाइनाइट सेट मान का भितरे भी हमें कंपैरिजन करि परिबो, राइट? केमिति करिवो चलो गोटे एग्जांपल देखि मु बुझौची जे जदि गोटे इनफाइनाइट दुईटा इनफाइनाइट सेट मध्य रे हमें केमिति कंपैरिजन करि परिबो बाय देयर पोटेंशियल. एबे हमें कोन पढिलु ना केंटर थ्योरम अनुसार जदि ए गोटे किछि सेट थिबो आउ पी ए तार जदि पावर सेट हेथिबो ताने मु ए रु पी ए कोनोसी प्रकार ऑनटू में फाइंड आउट करि परिबेनी, राइट? दैट मीन्स मु गोटे सेट ने भी कोन ना n सेट, दिस इज ए नेचुरल नंबर सेट, राइट? यार पावर सेट कोन होबो ना पावर सेट ऑफ n, दैट मीन्स यार कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ n, दिस इज पावर सेट ऑफ n. दैट मीन्स मु बाय केंटर theorem there is no onto map from n to power set of n. मु कहि परिबी सेमती, that means we can say n is infinite set, pn is what? Pn is also infinite set, right? But by Cantor theorem we say there is no onto map from power set n to n, right? That means what? That means simple, we can write this means this implied Pn power set of n has more potential than n, right? This implied what? That means power set of n ro cardinality is greater than the cardinality of n. This is a infinite set, and this is also
infinite set, right? but यारो कार्डिनालिटी टू अधिका, दैट मीन्स आम इनफाइनाइट सेट मान भितर भी आम कंपैरिजन फाइंड आउट करि परिबो, राइट दैट मीन्स मुझे मो पाखे दुईटा इनफाइनाइट सेट थिबो तांको भी मु कंपैरिजन करि परिबी बाय देयर कार्डिनालिटी, राइट? दैट मीन्स इनफाइनाइट सेट मानकार भी मु कार्डिनालिटी फाइंड आउट करि परिबी। जदि मु इनफाइनाइट सेट मानकार कार्डिनालिटी मु फाइंड आउट करि परिबी, दैट मीन्स मते कोन करिया पय पड़िबो ना सेही सेट मानकार कार्डिनल नंबर एसाइन करिया पय पड़िबो, है ना? ताकू मु किछि किछि नंबर कार्डिनल नंबर द्वारा डिनोट करिबी, राइट? दैट मीन्स मु लिखि परिबी hence we need to coin a symbol to denote the cardinality of infinite set as well, and this symbol is called a transfinite number. That means मु जो infinite set मानकर cardinality जो नंबर द्वारा डिनोट करिबी that number को मु कोन कहिबी ना transfinite number, right? दैट मीन्स मो पाखे एबे सुधा दुईटा इनफाइनाइट सेट मु देखिली, गोटे होची नेचुरल नंबर सेट एन होची नेचुरल नंबर सेट, ये गोटे इनफाइनाइट सेट आ गोटे इनफाइनाइट सेट किए ना पी पावर सेट ऑफ एन, राइट? दैट मीन्स एई मानकर कार्डिनालिटी गुडा को मु कोन करिबे एबे ना कार्डिनालिटी ऑफ एन को मु आलिफ नोड दैट फर्स्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर दैट इज आलिफ नोड को आम कहू आलिफ नॉट, राइट? दिस इज आलिफ नॉट, दिस इज द स्मॉलेस्ट कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट, एंड पावर सेट ऑफ एन रो कार्डिनलिटी कौन हम दिस इज 2 टू द पावर सेट ऑफ एन इज 2 टू द पावर कौन हम ना आलिफ नॉट, एंड या को आम कौन नाम देबो सी, राइट? That means आम लिखि पारिबो आलिफ नॉट इज लेस देन सी। सेकेंड आम देखिबो केंटर हाइपोथेसिस कौन कहूछि हमको। केंटर हाइपोथेसिस इज सेइंग देयर इज केंटर हाइपोथेसिस व्हाट इज सेइंग देयर इज नो ट्रांसफाइनाइट नंबर। व्हाट इज ट्रांसफाइनाइट नंबर? ट्रांसफाइनाइट नंबर को आम एबे आम देखिलो ट्रांसफाइनाइट नंबर क्या कहबो ना ट्रांसफाइनाइट नंबर जो नंबर गुड़ा इनफाइनाइट सेट रो कार्डिनल नंबर को डिनोट करे ताको हमें ट्रांसफाइनाइट नंबर बोली कहबो, राइट? तो ये आलिफ नॉट कार कार्डिनलिटी ना नेचुरल नंबर रो कार्डिनलिटी, राइट? पावर सेट ऑफ एन रो कार्डिनलिटी किए ना सी, राइट? नाउ ये आलिफ नॉट आउ सी भितरे कौन सी भी ट्रांसफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करिवनी, राइट? देयर इज ए नो ट्रांसफाइनाइट नंबर बिटवीन आलिफ नॉट टू सी, को मन रखिबो या को काम रे आसीबो, राइट? तो चलो ताने हम किसी नोट देखिबा। फर्स्ट नोट इज व्हाट टू इनफाइनाइट सेट आर सिमिलर देन सेम ट्रांसफाइनाइट नंबर दे आर यूज्ड टू डिनोट देयर कार्डिनलिटी। यदि ए आउ बी दुईटा सेट सिमिलर होते तेने तांकर कार्डिनलिटी मु सेम ट्रांसफाइनाइट नंबर द्वारा कौन करी ना डिनोट करी। जमती कि ई आम देखिलु ईटा सिमिलर क्या सहित थिला एन सहित, तो ई रो कार्डिनलिटी आउ एन रो कार्डिनलिटी मु कौन लिखी ना आलिफ नोट ही लिखी। सेकेंड नोट देखिबा 0 इज द स्मॉलेस्ट फाइनाइट कार्डिनल नंबर, राइट? सबुठू स्मॉलेस्ट फाइनाइट कार्डिनल नंबर किए ना 0। अब 0 कहारो कार्डिनल नंबर ना एम्प्टी सेट रो कार्डिनलिटी होची केते ना 0। सेमती मु देखिबी दुईटा स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट इज n। स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट किए हो ना n हो, राइट? देन थर्ड रे देखिबी कोन ना स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर किए ना आलिफ नोट। यदि स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेटटा n होची दैट मीन्स स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट कार्डिनल नंबरटा किए हो ना आलिफ नोट, राइट? आलिफ नोट। नाउ याकु तो हम देखिलो 5 नंबर देयर इज नो कार्डिनल नंबर बिटवीन आलिफ नोट एंड सी। एबी किछि एग्जांपल देखिबा। दिस इज
एग्जांपल नंबर 1 आरो ना सिमी इक्विवेलेंट सेट रो राइट हमें देखिलु जे f is mapping from n and e is the all even natural number तो या को भितर एई गुडा दुईटा कोन होछन्ती इक्विवेलेंट तो मु गोटे फंक्शन डिफाइन करि परिबी f of x equal to 2x right that means मु लिखिबी n equal to n and this is e मु मैप केमती करिवे सपोज ये 1 2 3 and so on तो 1 मैप करिवो काको 2 को 2 मैप करिवो काको ना 4 को and 3 मैप करिवो 6 को and so on and we see clearly observe that f is 1 1 and 1 2 so n is similar to e right ये फाइनाइट सेट ये भी फाइनाइट तो मो सिमिलरिटी इजीली चेक करि परिबी ना एटा x को जीवो 2 टा y को जीवो 3 टा z को जीवो 4 टा t को जीवो that means cardinality of a equal to cardinality of b this is equal to 4 so a is similar to b second देखिबा the finite interval right मो minus pi by 2 रो pi by 2 open interval दिया right this is equivalent to कोन r that means मते गोटे फंक्शन डिफाइन करिया पई पडिबो f which is minus pi by 2 रो pi by 2 को the open interval minus pi by 2 रो pi by 2 रो मो r को डिफाइन करिवि राइट क्लियरली मो लिखि परिबी f of x गोटे फंक्शन डिफाइन करिवि 10x राइट यार फिगर टा केमिति हबो ये होची minus pi by 2 ये होची pi by 2 राइट नाउ एमिति देखिले प्रत्येक एलिमेंट करेस्पोंडिंग रे हमें गोटे गोटे पॉइंट पाइबो ए लाइन ऊपर ए कर्व ऊपर राइट तो मु कहि परिबी f is 1 1 and on 2 so this implied minus pi by 2 रो pi by 2 is similar to r right second हमें कोन देखिबो now the function f is mapping from I to n that means I means this is integer right this is z right that means z is similar to n similar to even natural number right एकदम देखियो ना मु गोटे फंक्शन डिफाइन करिवि कोन ना f of x right जो तरी की f is mapping from z to n right f of x equal to what ना f of x equal to 1 होबो जेतले x टा 0 होबो 2n होबो जेतले x equal to n and minus n minus 2n plus 1 होबो जेतले x टा minus n होबो right where n is belongs to natural number now clearly f is 1 1 and on 2 this implied z is similar to n right next हमें देखिबो countable set हमें का कहबो a infinite set this is first definition different book गुडारे actually countable set रो different definition दिया है दुईटा definition right first definition कोन an infinite set is said to be denumerable right this is denumerable if it is equivalent to n that means जो infinite set टा the a को हमें कोन कहबो denumerable if there is a bijection map f from n to a that means a is similar to n then we can say a is a denumerable set right second definition countable lo kono na a set which is either finite hitbo or denumerable hitbo denumerable ta ko ame kon koi paribo countably infinite koi paribo right countably infinite is called a countable set
ओके नाउ आमे एबे सुधा कोन देखिलु काउंटेबल सेट देखिलु है ना फाइनाइट सेट गुडा तो काउंटेबल हे जिवे राइट जे गुडा इनफाइनाइट सेट हेतिवे इनफाइनाइट सेट मो आउथरे कहि दोची इनफाइनाइट सेट हमको दुई टाइप रो देखिबा पई मिलिबे गोटे अनकाउंटेबल राइट आ गोटे काउंटेबल राइट काउंटेबल से गुडा काउंटेबल रो कार्डिनलिटी कोन होबो ना आलिफ नॉट राइट बट अनकाउंटेबल सेट रो कार्डिनलिटी फिक्स नो अनकाउंटेबल सेट डिफरेंट डिफरेंट हे पारंती राइट जेमति कि मु लिखिबी पावर सेट ऑफ n ठीक ना पावर सेट ऑफ n ये होची कोन इनफाइनाइट सेट राइट पावर सेट ऑफ n इज इनफाइनाइट सेट मु लिखिबी यदि पावर सेट ऑफ n ये भी कोन हबो इनफाइनाइट सेट यारो कार्डिनलिटी टू कोन हबो सानो हबो दैट मीन्स यारो कार्डिनलिटी इज लेस देन कोन हबो कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट ये अनकाउंटेबल सेट हमें आपको जाके प्रूव करिवो ये भी कोन हबो अनकाउंटेबल सेट बट यांकर दुई जनकार कार्डिनल नंबर कोन हबो डिफरेंट डिफरेंट हबो राइट तो अनकाउंटेबल सेट रो कार्डिनल नंबर डिफरेंट डिफरेंट हेबे ठीक ना सेति पई हम पई चैलेंजिंग रहिबो जे अनकाउंटेबल सेट रो कार्डिनलिटी फाइंड आउट करिवा बट काउंटेबल सेट रो कार्डिनलिटी ऑलवेज आलिफ नॉट हबो दैट मीन्स मु कहि परिबी every countably infinite set is similar to n right से थ्योरम राइट लिखा है एबे देखिबा काउंटेबल सेट रो किछि रिजल्ट राइट काउंटेबल सेट नाउ s is a फाइनाइट सेट यदि s टा फाइनाइट सेट हितबो तारो किछि भी तमे सबसेट नियो तो से कोन हबो फाइनाइट हबो a and b आर फाइनाइट सेट यदि a और b दुटा फाइनाइट सेट हितबे ताकर इंटरसेक्शन भी कोन हबो फाइनाइट हबो एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज कोन हबो काउंटेबल हबो राइट काउंटेबल मीन्स तमे n बोली भाबिबो राइट n ऊपर काम होची यार तमे जहां भी सबसेट नबो से कोन हबो काउंटेबल हबो व्हाई बिकॉज़ n इज द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट जहां भी तमे नबो तो काउंटेबल हबो राइट ठीक है एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए d न्यूमरेबल सेट इज d न्यूमरेबल मीन्स कोन जेगुडा कि काउंटेबली इनफाइनाइट हेतिबे राइट जेगुडा कि सिमिलर टू n हेतिबे जेमति कि मु लिखिबी z इज सिमिलर टू n दैट मीन्स z को मु कोन कहबे d न्यूमरेबल सेट राइट तो यार इनफाइनाइट सबसेट के हो ना n तो n टा कोन हो काउंटेबल जेमति कि मु लिखिबी q is also similar to n आगो को जाके हमें प्रूव करिवो राइट दैट मीन्स q रो सबसेट के हो ना z दिस इज इनफाइनाइट सेट एंड व्हिच इज डिविजिबल q n of n भी कोन हो डिविजिबल सेट कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लिखिबी इवन नंबर भी कोन हो इनफाइनाइट सेट एंड व्हिच इज similar to n so this is also डिविजिबल okay now 5 number कोन ना if a and b are countable set then a intersection b is also a countable set this is easy countable in दुईटा जो countable set हेतिबे तांकर intersection भी countable हो every infinite set has a countably subset जेमति कि मु लिखिबी infinite set every infinite set या को जे कि हम डिस्कस करिवो जेमति कि मु लिखिबी n and infinite set is a countably subset यार सबसेट गुडा सब कोन है काउंटेबल आउ ठीक भल कि देखिबो जे काउंटेबली सबसेट थिबो सब सबसेट गुडा काउंटेबल होबो बोली सेंति किछि माने नै
बट काउंटेबली सबसेट आम ऑलवेज फाइंड आउट करि परिबो गोटे इनफाइनाइट सेट राइट 7 रे A is a countable, B is countable, then A union of B is countable. The union of D numerable collection of D numerable set is D numerable. That means suppose mu A1, A2, so on, AN and so on. These are the D numerable set. That means countably infinite set. Right? Then yankor union guda kon habo AI is belongs to N is किसी भी इंडेक्स लिखवा ऑर्बिटरी यूनियन ऑफ डी न्यूमेरेबल सेट इज डी न्यूमेरेबल राइट दैट मीन्स countable. So the finite set is not equivalent to any proper subset right. So the 10 number देखिए the union of finite set and countable set is countable. Union of finite set and countable set, union of finite set of and countable set kon habo countable right. That means एडी मु दुईटा जिनस हमें सिखिबो ना finite Cartesian product of countable set is countable, countable union of countable set is countable, but finite Cartesian product of countable set is countable. That means A and B दुईटा countable set है A cross B kon habo ना countable habo right. A B countable है A union of B kon habo ना countable habo right. This is very strong definition right. Something A1 A2 so on AI right. I is belongs to N, some natural number for I is belongs to N. Then Cartesian product of AI I is belongs to N ये कौन होगा ना countable होगा right. ये finite product. Something A1 A2 dot AN plus 1 and so on ये होची countable union right. Then countable union of countable set is कौन होगा countable right. किसी example देखियो countable set रो the set of rational number is countable right. Set of rational number is countable या कोई मी एमिति प्रूव करि परिबो right. हमको देखिबार अछि q is countable right. मु q को एमिति लिखि परिबे q plus union of q minus union of 0 right. जी q plus countable q minus countable and 0 तो countable हो तीनटा countable हेबे then q भी कोन हो countable हो. मु q plus टा को केमति लिखिबे ना q plus को हम लिखिबे q plus फॉर्म करिबे राइट. तो मु गोटे सेट लिखिबे e1 equal to मु लिखिबे I can write 1 by n such that n is belongs to capital N right. ए सेट टा का को सिमिलर करिवो ना नेचुरल नंबर को काहे कि ना मु ऑलवेज गोटे मैपिंग करि परिबी f from n to e right. केमिति ना f of n is equal to 1 by n. That means now this is clearly f ta kon hobo 1 1 and on 2. That means e1 is similar to 8. That means this is countable. Seventy e2 को लिखिबी कोन ना 2 by n so that n is belongs to n. This is also similar to n and so on. लिखि परिबी er equal to r by n so that r n is belongs to capital N. This is also similar to n. Now union of r is running from O, r is belongs to n right. This is what this is q plus right. That means er countable. The countable union of countable is countable. That means this is countable. Now q plus
रू क्यू माइनस को गोटे मैप डिफाइन करेंगे जमी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के माइनस एक्स दिस इज 1 1 and 1 2 and f is 1 1 and 1 2 this implied f is q plus is similar to q minus and this is similar to the n that means q is equal to q plus union of q minus union of n sorry this is union of 0 so this is count. Similarly the finite countable product of countable set is countable because n are countable so n cross n is gonna be countable. Thank you. ये डिस्कस करिबा नेक्स्ट क्लास रे हमें अनकाउंटेबल सेट रो स्टार्ट करिबा राइट. थैंक यू सो मच.